had started with the buffer solutions, buffers. So buffers, I told you that they are the mixture of a map of a weak acid and its salt, or a weak base and its salt, और उसको बनाने का मैंने आपको तरीका I told you everything about it. ठीक है, अब जो main important जो है वो that is the pH of buffer solution, how we can find it out. Okay, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, pH of buffer solution. So let's start with it. The pH of buffer solution. So what the formula we should use to find out the pH of the buffer solution? Okay. So let's suppose, my dear, that you people got a weak acid. Let's suppose CH3 COOH. If you put it into the water, so what would happen? The reversible reaction that would take place. This is a weak acid, so weak acid is a proton donor. तो ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन इधर डोनेट कर देगा. Okay, H positive. So what would happen? You will get CH3 COO negative plus H3O positive. Okay, so H3O positive. So this is, my dear students, one of the equation I have written, but I'm not going to write this one. Is okay or not? Yeah, it's okay. We can use it. But I think it's more better to use HA. So HA, so it would become A negative. Okay. Now if you look up here, this one and this one. So this one has given out the H positive ion from it. So that is why it is the acid. And acid, after donating proton, it would become conjugate base. I told you earlier. It's a conjugate base. And just like that, if you compare this one and this one, so this one has accepted the H positive ion. So this one, that is the base. And base, after accepting proton, it would become conjugate acid. Okay. Now you people know that whenever a reaction is reversible, it has to reach the equilibrium. And for equilibrium, we find out the equilibrium constant. So equilibrium constant, that is Kc, that is equal to the product's concentration. So the product's concentration, that is A negative into H3O positive divided by HA concentration into water concentration. Okay, is it clear? So the concentration of water, that is divided from that side, so it will come on the other side to be multiplied. So Kc into water concentration, that is equal to the A negative concentration into H3O positive concentration divided by HA concentration. Okay. So A negative concentration. Okay, A negative concentration. H3O positive. So these are the products. So products concentration divided by the reactant concentration. So the reactant concentration are present up here. Okay. So water will go on the other side to be multiplied. So anybody could tell me if the Kc and water, they are multiplied, and we got the acid in the denominator. So Kc and water, they would multiply to become Ka, which is called as the acid dissociation constant. I told you earlier about it. Okay, so Kc and water, they would form Ka. Why? Because in the denominator you got the acids present. Okay, so now this A negative. A negative is the conjugate base. I told you any ion type of the thing.
Iron type of the thing, it always comes from the salt. I told you in the previous lecture, okay, on Monday, okay. So any negative or positive ion, if you want to get that negative or positive ion, any conjugate type of the base or acid. So if you want to get it, you can get it from the salt, okay. So you have to take the salt, my dear. So A minus, it's a conjugate base, so it will come from the salt. So you should write up here salt concentration. Okay. So H3O positive, I told you many, many times, H3O positive and H positive, they are the same thing. Okay. So H3O positive and H positive, they represent the same thing. Normally, H positive does not exist in the nature. Okay. H positive always present in the form of H3O positive. Okay. So H3O positive and H positive, they are the same thing. So here we should write my dear H3O positive. इसकी place पे लिख देंगे H positive and then divided by Ha. Ha that represents the acid. So here we should write the acid concentration. Did you get it? Okay. So this conjugate base that comes from the salt, that represents the salt. Okay. So that is why this A negative, that is the conjugate base, we can get this A negative from the salt concentration. Okay. This is the salt concentration, H3O positive and H positive meaning same. So this is the H positive and divided by Ha, that is the acid. So acid concentration. Okay. Okay, my dear students. Now this acid concentration is divided up here. It will come on the other side to be multiplied. So if you look up here, Ka into acid concentration, okay, and divided by the divided by this salt would be divided on that side. So salt would be divided because it is multiplied on that side. So H positive ion concentration. So I have taken the acid on that side, it would be multiplied, and salt is multiplied, it would be divided. Okay. So Ka into acid over salt concentration, that is equal to hydrogen ion concentration. Everyone got it? Okay, now my dear students, what should you do? You should take negative log on both sides. Taking a negative log on both sides. Okay. So on both sides, you should take the negative log. Okay. So negative log, so just write it, negative log of hydrogen ion concentration, that is equal to, here we should write negative log of Ka into acid concentration divided by salt concentration. Okay. Everyone got it, beta? Yes, sir. Okay, now there is a rule, whenever we got the negative log and the two things, they are being multiplied. And if we want to write the negative log with each of these values, so what should we do? They should be added. This is the rule. Okay. So you should write it negative log of Ka. Okay. So now you should add the positive sign, add the negative log of this whole thing. So negative log of acid concentration over salt concentration. Okay. So negative log of hydrogen ion concentration, you know that it's actually the pH. Negative log means P and H pH. So pH, that is equal to this negative log of Ka. It is equal to pKa. pKa. So you should write it as negative log of Ka, or you could write it as negative log means P and this is Ka. And plus minus minus. So this is minus
and then log, and you got acid concentration, and you got salt concentration. Okay. Now have a look up here. This is the final equation. Final formula we are making. pKa means negative log of Ka. I told you. Okay. So this is the negative sign. Everybody just listen. This is the negative sign. If I want to change this negative sign into positive sign, so what should I do? I should make the denominator as nominator and nominator as denominator. Okay, so positive sign and then log, salt concentration will come in the nominator and the acid concentration that would come in the denominator, like that. रेसिप्रोकल को रिवर्स कर देंगे अगर आपने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो ठीक है। तो मैंने यही किया, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया, सॉल्ट को ऊपर एसिड को नीचे लिख दें आप लोग। ओके, सो दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स इज द फॉर्मूला to find out the pH of the buffer solution. Okay, so this is the formula. You have to memorize this formula. Okay, and from that we can make another formula. Okay, so POH is equal to negative log of Kb plus log salt concentration over base concentration. Okay, so this is the second formula. POH you can calculate, and when you calculate the POH, the pH can be calculated 40 minus POH. That would give you the pH value. Okay. So basic formula is this, but this one I'm telling you, if such type of the question would come, then you should use this one as well. So you should memorize only this formula. This is the main important formula, but you can make this formula by yourself as well. Okay. Everybody just listen, because the question relating to the buffer solution pH, they are tricky questions. Okay, so that is why we should emphasize all of these things. I'm going to do these questions for you. First of all, I will give you some time to practice, and after that, I'm going to do it for you. Okay, so let's start with the first question, my dear students. This is the first question. Find out the pH, and the Ka value is written up here. You can check the Ka value of the ethanoic acid. What the question is asking? Ethanoic acid. The ethanoic acid. Ethanoic acid Ka value is written this one. What is that? 1.7 times 10 raised power minus 5. That is the Ka value. Okay. Now let's do this question. Yeah. This is the Ka value. So let's start with this question, please. अगर कोई कर ले तो मुझे बता दीजिए क्या आंसर आया है। 5.07 आंसर आ गया जी एक बच्चे का, 5.07. सो लेट मी डू इट फॉर यू। यहाँ पे वो हमें कह रहा है पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है, और हमें एथेनॉइक एसिड की उसने कंसंट्रेशन दी हुई है और उसके सॉल्ट की कंसंट्रेशन दी हुई है। ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन है और ये वाली एसिड की कंसंट्रेशन है। तो आपको के की वैल्यू ये दी हुई है, तो पीएच का फॉर्मूला बफर सॉल्यूशन का क्या होता है? नेगेटिव लॉग of Ka plus log salt concentration over acid concentration. This is a very simple question. Okay, इसमें सिर्फ values लगानी है. So negative log of Ka value is 1.7 times 10 raised power minus 5 plus log the salt concentration is 0.2 and the acid concentration is 0.1. So if you solve it, you will get the answer 5.07. That is the pH. So this is the simplest question. Now we are going to move towards, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अब ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें मैंने तुम लोगों का दिमाग चेक करना है कि कौन कौन सा बच्चा अपना ब्रेन यूज करके इसको जो है वो करता है। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन बेटा। दिस इज द क्वेश्चन नाउ, ये पार्ट 4। लेट्स स्टार्ट इट, दिस क्वेश्चन। So everyone should do it.
I'm going to give you 4 minutes for it. 4 minutes. Okay, my dear, I'm going to do this question for you. इसको ध्यान से देखिएगा everyone. Okay, the question is saying calculate the pH of the buffer formed. So it means we originally does not have a buffer solution. He is saying buffer formed. तो इसका मतलब है कि कोई रिएक्शन होगा जिसके रिजल्ट में बफर की फॉर्मेशन होगी. और मैंने आपको बफर बनाने का तरीका क्या बताया था कि अगर आपने एसिडिक बफर बनाना है तो आप लोग वीक एसिड एक्सेस में ले लेते हो और उसमें स्ट्रॉन्ग बेस तुम लोग लिमिटिंग अमाउंट में डालते हो. याद आया? तो यहाँ पे ये वही कर रहा है कि इसने ये जो NaOH लिया है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. ये स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है जी. और ये वाला आपका वीक एसिड है. सो दिस इज द वीक एसिड. ओके. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ देम दे वुड रिएक्ट विद ईच अदर. तो हम लोग इनका रिएक्शन लिख लेते हैं CH3COOH plus NaOH that is going to form CH3COO minus Na positive plus H2O. So this is the equation that is formed when both of them they react with each other. Ethanoic acid का आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 10. So volume that is 10 cm cube and concentration that is 0.25 mole per dm cube. सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 10 cm cube. ये देखें 10 cm cube और इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1. अगर आप इन दोनों के मोल बनाते हैं तो इसके मोल बनेंगे मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000. ये फॉर्मूला लगाना है. तो कंसंट्रेशन 0.25, volume that is 10 or divided by 1000. So if you do it, you will get the answer 2.5 times 10 raised power minus 3. So these are the moles of ethanoic acid. ये ethanoic acid के मोल बनते हैं. ठीक है जी. Now you should make the moles of the NaOH. तो NaOH के moles यहीं से देख के बना लो. वो क्या बनेंगे? 1 into 10 raised power minus 3. ठीक है जी. दोनों के मोल्स बन चुके हैं. ये पहला स्टेप है. अब इन दोनों में से लिमिटिंग कौन सा है और एक्सेस में कौन सा है? कौन से मोल छोटी वैल्यू है और कौन सी बड़ी वैल्यू है? सो इफ यू लुक दिस वैल्यू इज स्मॉल एंड दिस वैल्यू इज बिगर. तो ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्शन में से फिनिश हो जाता है. सो दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. ठीक है. ये फिनिश हो जाएगा और इसी ने डिसाइड करना है कि आगे ये कितना बनेगा. तो ये देखिए 1:1 है. तो इसके कितने मोल बन गए माय डियर स्टूडेंट्स? इसके मोल बन गए 1 into 10 raised power minus 3 क्योंकि दोनों में 1:1 है. ठीक है जी. अच्छा, अब तुम लोगों ने निकालने एक्सेस में मोल्स इसके कितने हैं एसिड के. तो एक्सेस ऑफ एथेनोइक एसिड CH3COOH that could be calculated. इन वैल्यूज को माइनस कर दो. तो 2.5 times 10 raised power minus 3 minus 1 into 10 raised power minus 3. So that would be equal to 1.5 times 10 raised power minus 3. ये आपके जो है वो एक्सेस में मोल्स आ गए एथेनोइक एसिड के. एक्सेस ऑफ एथेनोइक एसिड यानी एक्सेस ऑफ एसिड. ये उसके मोल्स आ गए. और ये आपके पास मोल्स आ गए इसके सॉल्ट के. अब ध्यान से सुनो. सोल्यूशन में व्हाट यू गॉट इन द सोल्यूशन? यू गॉट द वीक एसिड. सो दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स द वीक एसिड and you got the salt. This is the salt. ठीक है जी. in water. तो भाई वीक एसिड और उसके सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है एक वाटर के अंदर उसको हम लोग बफर कहते हैं. तो बफर के लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए होती है. तो आप लोगों ने इसको कंसंट्रेशन में चेंज करना है. तो कंसंट्रेशन में कैसे चेंज करेंगे? पहले ये एसिड को चेंज करते हैं जी. ये इसकी कंसंट्रेशन बनाते हैं. ठीक है. तो आपको फॉर्मूला पता है मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है जी. तो मोल आपके पास है 1.5 दिस टाइम. 1.5 टाइम्स 10 raised power minus 3. कंसंट्रेशन निकालनी है. वॉल्यूम जब आप लेंगे यू शुड टेक द टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम 10 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे है. तो टोटल वॉल्यूम आपका कितना बन गया? 20. तो 20 डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है जी. ये आपकी एसिड की कंसंट्रेशन आ जाएगी. तो इसको सॉल्व करो. 1.5 टाइम्स 10 raised power minus 3 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज इक्वल टू
द एसिड कंसंट्रेशन, तो ये कितनी निकल आएगी? 0.075 मोल पर डीएम क्यूब, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये एसिड की कंसंट्रेशन आ चुकी है। इसी तरह ये सॉल्ट की भी कंसंट्रेशन बना दो इसी फॉर्मूले से, यही वाला जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें वैल्यूज लगा दो। ठीक है, तो इसमें जब वैल्यूज लगाएंगे तो मोल क्या है? 1 × 10⁻³ कंसंट्रेशन निकालनी है, वॉल्यूम टोटल लेंगे 20/1000। ठीक है जी, तो ये आपकी जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो इसको जब करेंगे तो ये 0.05 आ जाएगा, ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन आ गई आपकी। ठीक है, अब सॉल्ट की भी कंसंट्रेशन आ गई है, एसिड की भी कंसंट्रेशन आ गई है। तो भाई अब पीएच का फॉर्मूला लगा दें, पीएच इज इक्वल टू पी के ए या नेगेटिव लॉग ऑफ के ए प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन ओवर एसिड की कंसंट्रेशन। कुछ लोग जो उसको कंसंट्रेशन में चेंज नहीं करते, मोल की वैल्यूज ही लगा देते हैं, आंसर तो करेक्ट आ जाता है लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो यहाँ पे अब लगा लें पीएच दैट इज इक्वल टू पी के ए कितना है? 4.76 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन यू गॉट 0.05, एसिड की concentration 0.075. So if you solve it up, you will get the answer 4.58. So this is the pH of buffer solution. You got it? Online students, did you get it? Yes, sir. Okay, guys, do this question. Question number D. D का पार्ट 1 नहीं करना, D का पार्ट 2, 3 and 4 ये करने हैं। तो D के पार्ट 1, 2 और 3, सॉरी 2, 3 and 4, ये मैंने स्मॉल इसलिए कर दिया क्योंकि के की वैल्यू आपको ऊपर से यूज करनी पड़नी है। तो के की वैल्यू मैं यहाँ पे चले लिख देता हूँ आप लोगों को। चलिए जी शुरू कर दीजिए। ये के की वैल्यू लिखने 1.34 टाइम्स 10⁻⁵ है। चलिए जी, ये देखें जी, सबसे पहले तो हमें क्या कह रहा है? बफर सोल्यूशन एफ वाज प्रिपेयर्ड, तो इसमें भी प्रेपरेशन हो रही है। तो इट मींस प्रेपरेशन में वो क्या कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये तुम्हारा एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड में जो है वो डाल रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस आपकी लिमिटिंग होगी, फिनिश हो जाएगी, ये मतलब है इसका। तो पहले उसकी इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी ये देखें। मैं इस जगह पे बनाने की बजाय ऊपर बना रहा हूँ। ये देखें, ये प्रोपानोइक एसिड CH3CH2 COOH and it reacts with the sodium hydroxide. So sodium hydroxide का फॉर्मूला होता है NaOH. So when both of them would react, they would form CH3 CH2 COO minus Na positive and plus H2O. Okay. अब इसमें what the thing he has given us, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसने हमें मोल दिए हुए हैं, कंसंट्रेशन नहीं दी हुई। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसने मोल दिए हुए हैं डायरेक्टली 0.03, जबकि प्रोपानोइक एसिड का उसने ये कंसंट्रेशन है एंड दिस इज द वॉल्यूम ही हैज गिवन। तो वॉल्यूम माय डियर दैट इज 100 cm³ एंड कंसंट्रेशन दैट इज 0.5। तो अगर आप इसके मोल बनाओगे तो वो 0.05 बन जाएंगे। m इज इक्वल टू सी इंटू वी से। तो इन दोनों में से चेक करें, ये मोल एथेनॉइक एसिड के हैं और ये मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं। दोनों में से कौन से छोटे मोल्स हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्शन में से फिनिश हो जाता है और इसी ने डिसाइड करना है कि आगे कितनी जो है वो सॉल्ट बनेगी। तो 1:1 है, तो इसके भी मोल जो है वो कितने बन गए माय डियर? इसके मोल बन गए 0.03। सो दीज आर द मोल्स ऑफ सोडियम प्रोपानोएट। अब ये मोल है और ये एक्सेस में है, दिस इज एक्सेस। तो इसकी एक्सेस अमाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे? मैंने आपको तरीका बताया है कि एक्सेस ऑफ प्रोपानोइक एसिड, मैं इसका पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा, पीए का मतलब प्रोपानोइक एसिड। तो वो आप जो इसके इनिशियल मोल है 0.05, उसमें से माइनस कर दें 0.03, यानी ये वाले जो हैं, तो ये बचेंगे 0.02। तो आपके पास एक्सेस मोल आ गए 0.02, ये प्रोपानोइक एसिड के मोल आ गए, ये मोल्स हैं। ठीक है जी।
आप मोल को कभी भी फॉर्मूला में यूज नहीं करते। ये देखिए उसने कंसंट्रेशन आपसे पूछी हुई है, तो आप इनको कंसंट्रेशन में चेंज कर लें। तो प्रोपानोइक एसिड की कंसंट्रेशन निकालनी है तो मोल का फॉर्मूला लगा दें, मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। सो द मोल यू गॉट 0.02। कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम टोटल जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100 ही लिखा हुआ है, कहीं और वॉल्यूम है ही नहीं, तो यहाँ पे 100 लिख दें और डिवाइडेड बाय 1000। तो ये दो जीरो से कट के 10 उधर आके मल्टीप्लाई हुआ। सो प्रोपानोइक एसिड की कंसंट्रेशन आ गई 0.2 मोल पर डीएम। उसके बाद ये जो आपका सॉल्ट है इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, तो वही फॉर्मूला 0.03 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन वॉल्यूम 100 है और डिवाइडेड बाय 1000। ये दो जीरो कट गए तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई सॉल्ट की कंसंट्रेशन यानी सोडियम प्रोपानोएट सॉल्ट है, प्रोपानोएट। ये नीचे लिखा होगा लेकिन मेरे पास क्योंकि मैं नीचे नहीं कर रहा, तो इसकी कंसंट्रेशन आ गई 0.3। अब आप पीएच का फॉर्मूला लगा लें। ठीक है, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के ए प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन ओवर एसिड की कंसंट्रेशन। इसमें वैल्यू लगा दें, तो के की वैल्यू मैंने क्या लिखवाई थी बोलो, 1.34 टाइम्स 10⁻⁻⁵, और आगे प्लस ये लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.3, तो लॉग 0.3 यानी यहाँ पे लिख दें लॉग 0.3 डिवाइडेड बाय 0.2। तो इसको सॉल्व करें क्या आंसर आता है 5.05। सो दिस इज योर आंसर माय डियर।